Okay, so good afternoon, everyone. Welcome to the first session of comprehensive revision class of programming. So, as I had already told you, हमारी comprehensive revision class is divided into two segments. The first, in which we will be discussing the theory and practical examination questions. That what kind of questions will come into your theory paper or your practical examination. In the second session, that is on 9th, I'll be discussing that what kind of questions will be coming for your internal assessment. So I'll be discussing around 100 questions of IA, sample questions of IA, along with whatever problems you have in any topic. I'll be taking up that in the next revision class. So today I'm going to show you a few papers. Although it is not of PGDADLM, but it is of programming with Python, and such kind of questions will also come into your paper, your exam. So the pattern of your question, the pattern of your examination, the final theory examination is that you have a question paper of 60 marks, out of which you have to do 5 questions of 12 marks each. So you may be having 6 or 7 questions in your paper. एक पेपर में 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन की मार्किंग 12 मार्क्स की होगी. You will have to do any 5 of them. But yes, if one question have two parts, if a question has 2 parts or 3 subparts, all the subparts should be attempted together. That is, मान लो question 1 के अंदर there are 3 subparts with 4 marks, and in question 2 you have 2 subparts, let's say 8 and 4 marks. So you have either you attempt question 1 completely or question 2 completely. आप mix and match करके attempt नहीं कर सकते हो. So you have to attempt a complete question of 12 marks each, and 5 such questions have to be attempted. So I hope the pattern is clear. So now let's start. What kind of questions will we be getting? So as you can see, what I'll do is, on my screen you will see the question. You have to work out with me that what exactly will be the answer of these questions, and at the end I will show you what is the correct answer. Is that okay with everyone? Yes, ma'am. Okay. So let's start with the very first question. The very first question is okay. So अभी इसमें भी मैंने क्या किया है, जनरली आप लोगों को आउटपुट और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आते हैं एंड सम थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं. जो बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए अलग से लास्ट स्लाइड में रखे हैं. फॉर नाउ हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पहले किसी न किसी पाइथन एग्जाम में, डीयू के एग्जाम में आए हुए हैं, जो हमारी प्रैक्टिस के लिए ठीक है. मतलब दे आर फ्रॉम द लेवल ऑन विच वी वांट टू वर्क. ओके, so let's just give me 1 second. Okay, so the very first question is, क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए. आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है दैट एक क्वेश्चन थियरी का होगा. लेट्स से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ देम. ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और साथ में आपको छोटे छोटे आउटपुट वाले 2 या 3 पार्ट्स दे दिए जाएंगे, 2 और 3 मार्क्स के. ठीक है. सो आउटपुट वाले जब भी थियरी का क्वेश्चन आएगा तो गुड एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड. बट for the output question you don't have to you don't have to write anything, you just have to give the output. So like in the very first question, as you can see, what will be the output of the following code? So you have a list called A. एक लिस्ट है A जिसमें 1 2 3 4 5 अप टिल 9 नंबर है. बताओ क्या होगा. हम क्या कर रहे हैं, हम A की स्लाइसिंग कर रहे हैं, राइट. हम स्लाइसिंग कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया था, कोलन से बाद में जो नंबर है, क्योंकि हमने स्लाइसिंग करी है, हमने बिगिनिंग में कोई भी इंडेक्स नहीं दिया, तो ये 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, इट विल गो टिल द लास्ट नंबर. लास्ट नंबर क्या है हमारा 5, तो इट विल गो टिल 5 - 1, दैट इज इट विल गो टिल 4. सो अब हम यहां से अगर देखें तो दिस इज इंडेक्स 0, 1 is at index 0, so this is index 0, this is index 0, this is 1 2 3 and 4. तो आपकी ये जो प्रिंट A:5 है वो आपको प्रिंट करके देगी 1 2 3 4 5. Is that clear? Class, is that clear?
See, I need your inputs at every stage so that I should know that you are listening to me. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. You can give a thumbs up as well if you don't want to speak. That's okay. You can give a thumbs up. That will do. Okay. So the next question is, what are mutable and immutable data types in Python? Write two examples. So इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। ये मेरी पीपीटी में भी वेल एक्सप्लेन्ड है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। सो यू कैन सी इट फ्रॉम देयर कि म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। म्यूटेबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं और इम्यूटेबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। दोनों टाइप के डेटा टाइप के एग्जांपल्स हैं मेरी पीपीटी में। यू कैन सी दैट, यू कैन वर्क आउट फ्रॉम देयर। आल्सो दैट इज प्रोवाइडेड इन बुक एज वेल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन क्योंकि कंप्यूटर है, ये प्रोग्राम मतलब इट इज मोर ओवर मैथमेटिक्स का एक डिराइव सब्जेक्ट है, तो आप जो कुछ भी लिखेंगे बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट लिखेंगे। इज दैट ओके? नाउ इन नेक्स्ट it says what is the value of sum after execution of the following code. अब आपको एक कोड दिया है और आपको इसका आउटपुट बताना है। so let's start working on this code. so as you can see इसके अंदर एक फॉर लूप है। ओके, एंड इट इज आस्किंग यू कि आपको क्या करना है। इट इज आस्किंग यू सम, एक वेरिएबल है सम जिसका वैल्यू है 0। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सम एक कीवर्ड है, बट इस तरीके के कोड्स में अगर ऐसा कुछ वर्ड आ जाता है कि कीवर्ड भी है लेकिन आपको एरर फाइंड आउट करने को नहीं लिखा है, तो आप सम को एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही डील करेंगे। ठीक है। सो सम के अंदर वैल्यू है 0 फॉर आई इन रेंज 0 18 3। इसका क्या मतलब है? आई एक वेरिएबल है जो आइट्रेट होगा। रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से कहां तक जाएगी? 18 तक। सो दिस इज स्टार्ट ऑफ द रेंज। ठीक है, जस्ट अ सेक, सॉरी। so this is start of the range and then you have end of the range. End of the range is 18 and we are required to do the increment at every step in increment of how much number? Number 3. Okay, हमें increment करना है number 3 का। Fine, somehow my mouse is not, चलो तो हम क्या क्या करेंगे बच्चे, हम 0 से शुरू करेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ये चेक करेगा कि अगर आई जो भी डिजिट है वो डिवाइड बाय 6, अगर अब मैं आई को 6 से डिवाइड करती हूँ, मॉड्यूलो ऑपरेटर मुझे क्या देता है? रिमाइंडर। आई को 6 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम सम में एक इंक्रीमेंट करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। सो लेट स्टार्ट। जब आई का वैल्यू 0 है, 0 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 मिलेगा, सम इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सम की वैल्यू पहले 0 थी, अब कितनी हो जाएगी? 1। ओके, नेक्स्ट सम की वैल्यू पहले सम की वैल्यू थी पहले 0, अब हो जाएगी somehow my pen is not at all responding. I'm so sorry. My tablet pen is not responding. So let's work out like this only. So it has become 1 now. After that, some I will become 1. अब जब 1 को 6 से मॉड्यूलो करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा. तो then this will not increment. Similarly, it will go on. अब next number जो divide होता है वो है 6. तो जब 6 I की value 6 होगी, 6 modulo 6 will give you a 0 as an answer. तो दूसरी बार ये सम की वैल्यू इंक्रीमेंट कब होगी? पहली बार 0 पे इंक्रीमेंट होगी, फिर 6 पे इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद 12 पे इंक्रीमेंट होगी। 12 के बाद जब वैल्यू 18 होगी तो हमारा लूप कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे ही मुझे एंडिंग वैल्यू मिलती है, हमेशा याद रखना लूप लिस्ट हर कुछ अपनी लास्ट वैल्यू से एक कम तक चलता है।
सो जैसे ही वैल्यू 18 होगी लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। सो हमारे सम की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, क्या आएगी वैल्यू बताओ? एनीवन? 3 बार वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। पहली बार जब 0 है, दूसरी बार जब 6 है, तीसरी बार जब 12 है। तो पहले वैल्यू 0 थी, 3 बार इंक्रीमेंट हो जाएगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 1 2 3। So this will become 3. So this is the output. The value of your sum will be 3. Next, it says next it says indicate the error if any in the given statement. So you have to find out if there is any error in the given statement. और अगर कोई एरर है तो आपको बताना है कि कौन सा एरर है। सो नाउ ऑन माय स्क्रीन यू कैन सी देयर इज अ वेरी बिग एरर, इट सेज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। इस तरीके का एरर आ रहा है, बट नाउ सिंस ऑब्वियसली ये अगर मैंने इसको रन किया तो इस तरीके का ही पाइथन एरर आएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? आपसे एक बहुत ही सिंपल सा आउटपुट एक्सपेक्टेड है। क्योंकि स्ट्रिंग है हेलो पाइथन, आप कोशिश क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रिंग का फिफ्थ एलिमेंट दैट इज द स्पेस, उसकी जगह आप टी लिखना चाह रहे हैं। बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इम्यूटेबल डेटा टाइप होने की वजह से हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। और हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम एक ऐसी चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट बाय रूल चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए ये एरर है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है। सो इफ यू आर वेरी गुड एट पाइथन, आपको एरर याद रहता है कि आइटम असाइनमेंट नॉट अलाउड, तो भी चलेगा। अगर आप सिंपल ये भी लिख देते हो कि स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, सो दिस विल थ्रो एन एरर, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ, ठीक है। आप अपनी लेमन लैंग्वेज में लिख देते हो कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है इसलिए एरर आएगा, तो भी चलेगा। अगर आप ये पूरा स्टोरी लिख सकते हो द एग्जैक्ट एरर, वेल एंड गुड, दोनों ही केसेस में आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, शैल वी मूव? This one. Yes, ma'am. Now before moving, you let me know कि questions ठीक लग रहे हैं। Are you able to on the same page as me? कर पा रहे हो ना मेरे साथ साथ solve? This one. Perfect. So the next question is very easy. Write and explain any 4 data types used in Python with suitable example. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 डेटा टाइप पूछे हैं, आप कोई भी 4 डेटा टाइप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर, डेटा टाइप पूछा है तो कोशिश कीजिए कि आप डेटा टाइप ही एक्सप्लेन करें, आप स्ट्रिंग, लिस्ट इन सबको एक्सप्लेन ना करें, वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज इन माई पीपीटी यू हैव इन माई फर्स्ट क्लास की पीपीटी का जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसमें बहुत ही डिटेल में डेटा टाइप्स दिए हुए हैं। सो इफ सच अ क्वेश्चन कम, इट इज वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज यू जस्ट हैव टू राइट इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, जिसमें हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। रेंज याद है, बहुत अच्छी बात है, लिख दो। बाई चांस रेंज नहीं भी याद है तो एक एग्जाम्पल दे दो। फॉर एग्जाम्पल, -1, -2, -0, 4, 6, these are integers. Similarly, you can write character as the data type that is used to represent the alphabet or Greek letters. So you can use character data type. Character की example हो गई ABCD. Boolean true false को represent करने के लिए we use Boolean data type. Boolean की example हो गई 1 0. So these type of things you can do. Now the next question is write the output of the following statement. So the statement is name equals to Kavita, print hello name, 2 plus 2 is 2 plus 2. So let's say what exactly this will give as an output. Name variable के अंदर value है कविता, okay, right. मैंने print करने के लिए क्या दिया है, print statement के अंदर आपके 4 कॉमर्स हैं, इसका मतलब 4 पैरामीटर्स हैं जो आपने प्रिंट होने भेजे हैं। जो कुछ भी डबल कोट के अंदर है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और जो डबल कोट के अंदर नहीं है वो इवैल्यूएट होके प्रिंट होगा। इसका मतलब हेलो एज इट इज प्रिंट होगा, नेम की जगह जो भी नाम है वो आ जाएगा। व्हाट इज द नेम इज कविता, सो हेलो की नेम की जगह यू विल गेट कविता। उसके बाद 2 plus 2 is, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा,
एंड उसके बाद जो 2+2 है जिसमें डबल कोट्स नहीं है वो 2+2 4 की तरह प्रिंट होगा. So the complete sentence will be, hello Kavita, 2+2 is 4. This will be the output. This is what you are required to write. You can see 5 marks का question है, 5 छोटे छोटे statement है. You just have to give answer of every statement. Now in next question, you have to solve question number 2nd and 3rd and let me know the answer. Part number 2, 3 बताओ, second का क्या आंसर है? 95.6. ठीक है. थर्ड का मैम आर, हेलो कॉमा आर. hello comma r, we have to print minimum. It will be only one letter बेटा, कोई एक ही word आएगा उसमें. So exactly थर्ड वाले में हम कंपेयर कैसे करते हैं? हम कंपेयर करते हैं वर्ड को सबसे पहले फर्स्ट लेटर से. ठीक है, जो बाद में आता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है. अब सबसे बाद में जो लेटर आ रहा है वो है यू, तो आई गेस इसका आंसर यू होना चाहिए. बट नाउ देर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव. यहाँ पे एस जो है वो कैपिटल लेटर्स है, तो यू वी हैव टू रिमेम्बर कि स्मॉल लेटर्स की जो वैल्यू है वो कैपिटल लेटर से छोटी है. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड इनटू पीपीटी. तो स्मॉल लेटर्स की वैल्यू कैपिटल से छोटी है, तो सिंस इसका पहला लेटर ही कैपिटल लेटर है, तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यू अल्फाबेटिकली बाद में आता है वाई, बट since capital S is there, this is the, sorry, I'm so sorry, just a minor thing. हम minimum find out कर रहे थे, not the maximum. I'm so sorry. So what exactly we are doing? हमारे पास है hello, how are you, sir. So जो कैपिटल लेटर होते हैं उनकी वैल्यू स्मॉल लेटर से छोटी होती है. द रेंज ऑफ कैपिटल लेटर्स इज स्मॉलर देन द रेंज ऑफ स्मॉल लेटर्स. तो इसमें कैपिटल लेटर का एक वर्ड तो सबसे छोटा यही वर्ड है. So that is why the answer is sir. Next है आपको 978 और 34 को प्रिंट करना है प्लस करके. Since ये जो प्रिंट के अंदर आर्ग्यूमेंट है ये दोनों डबल कोट्स में है, तो ये एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, और स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होने की वजह से ये दोनों क्या करेगा, सम करके रिस्पॉन्ड करेगा. सो दिस विल बी 978 34 एज अ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन. नेक्स्ट इज आपको इवेल्युएट करना है 93+8. तो इवैल फंक्शन क्या करता है, इवैल फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में आप जो भी एक्सप्रेशन देते हैं उसको इवेल्युएट कर देता है. सो हियर यू हैव गिवन एन एक्सप्रेशन 93+8, सो द आंसर इज 101. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now in the next slide you can see the question is, what do you understand about syntax errors and semantics error? Explain with the suitable example. So we have already done a huge discussion on what are the syntax errors and what are the semantics error. Those errors which occur due to the mistake in programming language rules. आप rules के साथ छेड़छाड़ कर दोगे, जैसे कि कोलन नहीं लगाया, इंडेंटेशन नहीं दी, ठीक है, ब्लॉक एक्सपेक्टेड था, पैरेंथेसिस एक्सपेक्टेड था, आपने नहीं दिया, तो वो सिंटेक्स एरर दिखाएगा. और वो चीजें जिसका रूल से कुछ लेना देना नहीं है, फॉर एग्जांपल द लॉजिकल मिस्टेक. सो लॉजिकल मिस्टेक कैसी होंगी, जिसका रूल से कुछ लेना देना नहीं है. सो दोज मिस्टेक विल बी कंसिडर्ड एज सिमेंटिक एरर. ठीक है, जो कि आपके आउटपुट को हैम्पर करेगी मगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को हैम्पर नहीं करेगी. तो जो कुछ भी एग्जीक्यूशन को हैम्पर करता है वो सिंटेक्स एरर है, जो आपके आउटपुट को हैम्पर करे वो सिमेंटिक्स एरर है. इसके एग्जांपल्स हैं, देयर आर अ लॉट इन द पीपीटी एज वेल एज बुक, यू कैन गो थ्रू देम. Now again the next question, most of the question that I have tried to cover in my presentation are output based, क्योंकि इसी में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है, theoretical question में तो आई गेस उतनी प्रॉब्लम नहीं है. So the next question is, perform the following operation on the list given below and write the output of each. So you have a list 1 and a list 2. List 1 के अंदर there are two values, red, green. List 2 के अंदर there are three values, 10, 20 and 30. तो list 2 हमारी integers की list है, list 1 हमारी strings की list है. So now we have to write the output of the following statement. 4 marks का question है. There are 8 statements. So each statement will give you half marks. Okay.
So we just have to write the output. Output based question बहुत अच्छे इसलिए होते हैं that if you have the knowledge of the language, if you know, if you have studied, so आपको इसको लिखने में बहुत आसानी होती है. It will hardly take 2 to 3 minutes to answer a 4 marks question. Otherwise अगर theory based 4 marks का question होगा तो that will take a lot more time to answer. So output based question में never give explanation unless and until they have asked. अगर question ने पूछा है कि explain करो तो लिखो, वरना explanation लिखने की जरूरत नहीं है, जो output है वो लिख दो. So here it says that you have the list. You have list 2 and you have to multiply it by 2. तो हमें पता है कि लिस्ट पे अगर हम मल्टीप्लीकेशन चलाएंगे तो वो कैसा ऑपरेटर है, ब्रॉडकास्ट ऑपरेटर है. ठीक है. सो कंप्लीट लिस्ट 2 क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सिमिलरली हमें लिस्ट 1 में प्रिंट करना है. लिस्ट 1 में अगर मैं एक और चीज ऐड कर दूं ब्लू, तो ऐड हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट एक इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है. लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है. तो लिस्ट में कुछ भी हम अपेंड कर सकते हैं, और जैसे ही हमने इसमें ब्लू लिखा वो उसके लास्ट में ऐड हो जाएगा. सो लेट्स सी. यहाँ पे आई एम सो सॉरी. सो लिस्ट 2 विल बिकम ट्वाइस 10 20 30 10 20 30, 2 बार रिपीट हो गया है. लिस्ट सेकंड वाले में क्या है, रेड ग्रीन ब्लू इज गेटेड हैज बीन एडेड टू द लिस्ट. देन थर्ड में आपको लिस्ट 1 की लेंथ प्रिंट करनी थी. ठीक है. लिस्ट 1 की लेंथ क्या है, लिस्ट 1 की लेंथ है रेड, 2 ही एलिमेंट है तो इसकी लेंथ अभी 2 ही रहेगी. यहाँ पर आपने सिर्फ प्रिंटिंग के लिए लिस्ट को चेंज किया है. सो दिस यू हैव टू कंसीडर वेरी मच. आपने यहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग के लिए लिस्ट को चेंज किया, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिख दिया कि लिस्ट जो है हमारी लिस्ट में ब्लू ऐड कर दो प्रिंट करने के लिए. अगर आपने इसको लिस्ट में असाइन करवा लिया होता, यानी कि इफ यू हैड रिटन list 1 equals to list 1 plus blue, then it would have become a new list. But here you have not done that, so the length of the list is going to be the length of original list, that is 2. Similarly, लिस्ट 2 का -1 यानी जब भी हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो हम कहां से काउंट करते हैं, पीछे से. सो हियर द -1 इंडेक्स इज द वेरी फर्स्ट इंडेक्स फ्रॉम द लास्ट, दैट इज 30. सो द आंसर इज 30. नेक्स्ट लिस्ट 2 का 0 से 2 तक. सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, आई एम ट्राई टू स्लाइस आउट द लिस्ट 2 फ्रॉम एलिमेंट 0:2. सो हम 0 यानी कि ये वाला, और 2 से पहले यानी कि 2 - 1 तक चलेगा, तो इट विल गिव मी 2 एलिमेंट्स 0 and 1. 0th एलिमेंट है 10, फर्स्ट एलिमेंट है 20. सो इट इज गिविंग मी अ लिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स 10 and 20. नेक्स्ट इज मिनिमम ऑफ लिस्ट 2. सो लिस्ट 2 में मिनिमम कौन है, 10. सो इट विल शो मी 10. नेक्स्ट इज सम ऑफ लिस्ट 2. लिस्ट 2 में 3 एलिमेंट्स है, तीनों का जो सम है वो 60 है, तो इट इज गिविंग मी सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. सिमिलरली लास्ट है 40 इन लिस्ट 2. क्या आपको लिस्ट 2 में 40 दिख रहा है, इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है. तो हमने ट्राई किया कि क्या हमें लिस्ट 2 में 40 दिख रहा है. इफ यू कैन फाइंड आउट 40 इन द लिस्ट 2, द आंसर विल बी yes. If you cannot find out 40 in the list 2, then the answer is no. So can you find out 40 in the list 2? No, ma'am. So the answer is false. Okay. So in एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जिसका काम होता है चेक करना जिसका काम होता है कि whether this element is present in the list or not. Okay, just give me a second. So in the next question, you can see that you have to write a Python program to calculate the area of a rectangle. Sides of the rectangle should be entered by the user using built-in input function. Also validate the user enter data before calculating the area. So I'm giving you 10 minutes to write this program at your end, and then we will discuss the code.
So are you able to write it? Have you tried? Have you written? Am I audible, class? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, ऑडिबल तो हो, मतलब लिखा नहीं है. Okay. So in any case, even if I ask you that have you written it or not, and if you have not done it, you can gracefully turn me down कि मैडम नहीं लिखा है या नहीं लिखा जा रहा. That's okay, fine. So let's see what exactly this program wants. It says write a Python program to calculate the area of rectangle. So I want to calculate the area of rectangle and the sides of rectangle should be entered by the user. तो जो sides of rectangle है वो मुझे user से चाहिए, ठीक है. और फर्दर इट सेज कि जो भी यूजर से डेटा आएगा उसको वैलिडेट करना है. सो वैलिडेट करने का क्या मतलब है कि हमें यूजर क्या देगा, हमें यूजर इंटीजर्स देगा. सो वी शुड जस्ट वैलिडेट कि हमें कोई नेगेटिव नंबर ना दे दे यूजर. ऑल अदर नंबर्स आर फाइन. 2.5, 2.6, आई कैन टेक एनी वैल्यू, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 0. सो बेसिकली इस प्रोग्राम के दो पार्ट्स हैं. ओके, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस प्रोग्राम. One is that we are trying to basically divide this program into two parts, ठीक है. One is that in which you are just checking or validating कि मेरे को जो यूजर ने इनपुट दिया है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है. और दूसरा अगर चेक कर लिया then we are calculating the area of rectangle. So let's see, I have a very standard program on it. मैंने अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखा है, but since you even if you write the basic logic, that will also work. So here you can see here, just a sec, I'll just erase this up for you guys so that it's easier. Okay, so now let's see. So here we have the function. The first is calculate area, okay, and the other is get positive value. So ये function जो मैंने लिखा है, this is a very standard function. अगर आप इतने well versed नहीं भी हैं programming से, तो आप बिना error raise किए एक normal function भी लिख सकते हैं. How exactly you are going to raise? You will get the number. मतलब जब भी आप user से number लेंगे, then you will have to check with this function. So here, if you are getting a number from the user, this is a function which checks whether the number is positive or not. So here in this function, we have written that get positive float. We are asking for a positive number and we will send some variable. So the name of the variable is prompt. You can send any variable. So while true, we are trying, what we are trying, हम check करें कि जो भी value आई है, जो भी हम input ले रहे हैं, अगर वो less than 0 है, अगर वो 0 से कम है तो हम उसको बोल देंगे कि एक पॉजिटिव नंबर भेजो, वरना हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है. और हम यहाँ से रिटर्न वैल्यू कर देंगे. फर्दर इसी फंक्शन के अंदर क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम यहाँ पे रेज करी है कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू एरर हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्योंकि ट्राई ब्लॉक है, तो इस ट्राई ब्लॉक को जैसे यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई, लेस देन ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई, तो हम इस एक्सेप्ट ब्लॉक पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे कि प्रिंट इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ नंबर. सो हम उसको बोले कि कोई नंबर एंटर करे, वो ABCD या कोई ऐसा कुछ ना दे दे. सो नाउ फर्दर इट्स कैलकुलेटिंग द एरिया. एरिया कैलकुलेशन बहुत आसान है. यू हैव टू गिव टू पैरामीटर्स लेंथ एंड विड्थ एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई देम. So in your main function, basically you can write all these things if you want to. If you don't want to, that's also okay. कि print calculate area, length, width, and then you can get the length के लिए आप एक मैसेज पास कर सकते हैं, width उसके लिए width के लिए, and you get the parameters checked by the get positive function and then you can print the area. So this is a very standard program. आप इसको और easy तरीके से भी लिख सकते हैं. For your purpose, I will also be sending the code of a little easier level also. ठीक है.
Okay, before moving to the next, let's understand. It says rewrite the following code segment using while loop. तो इसमें there are two question in which we have been provided two for loops. 6 marks का total question है. You have 3 marks for each. 3 marks का first, 3 marks का second. I'll be solving first for you and you will be solving second for me. Okay. So in the very first thing, it is saying total is equals to 0. So there is a variable total whose value is 0. Further, I have a for loop जिसका variable है. For का variable क्या है हमारा? Count. तो for का iteratable variable है count और उसकी रेंज दी हुई है 1 से लेके 21 तक. उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग दी है और हमें टोटल प्रिंट करना है. हमें जो while लूप लगाना है जिस एरिया पे, वो एरिया है ये. इस एरिया पे हमें while लूप लगाना है. सो बेसिकली अगर हम लिखेंगे तो हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू राइट इट. हमें जो इस एरिया से जो पहले है वो भी एज इट इज लिख लेना है और इस एरिया के जो बाद है वो भी एज इट इज ही लिख लेना है. सो लेट्स से इफ इट इज सॉरी, let me write it here. So it is so the variable total will be equal to 0. Further, further we have the variable count. So let's say मैं इसको c बोल देती हूँ. So variable count की वैल्यू इनिशियली आप देखो कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से. तो मुझे यहाँ पे count की वैल्यू वही असाइन करनी है जो वहां पे असाइंड है. So that is 1. Okay, just let me take an eraser and write it properly. So we are basically trying to change this much of the code. So here what I'll do, I'll write the code. So here I'm telling it that this is fine. This line is fine. We can add it. Total equals to 0. Here I will describe count equals to 1. The value of count will be 1. Then I'll apply the while loop. तो while में क्या होता है? while में एक single condition लगती है. So ये कहाँ तक चलना चाहिए? वो while में लगता है. So while c is less than 21, क्योंकि मुझे 21 से एक कम तक चलाना है. Always in range it is till 20. 1 to 20 तक चलाना है. So I'm checking whether it is less than 21. Then I will do the processing, the same processing. तो यहाँ पे हमने processing कर दी. That is total plus equals to count. Same processing statement लिखनी है. So this statement is very fine. After that we have to write the increment statement over here. क्योंकि for loop auto increment होता है लेकिन while loop को हमें increment कराना पड़ता है. So हम iteratable variable loop variable को increment कराएंगे. ठीक है, by 1, क्योंकि ये by default 1 से ही increment होता है. And at the end print total is fine. हम loop के बाहर आके print total लिख सकते हैं. So let's see the output. इस तरीके से you will get it. So as you can see, हमारी टोटल पहली ही स्टेटमेंट थी जो पहले से लिखी हुई थी. दैट इज फाइन. काउंट को हमने 1 दिया क्योंकि यहाँ पर 1 से शुरू था. सो काउंट को हमने 1 दिया. वाइल काउंट लेस देन 21 क्योंकि कंडीशन वो थी तो हमने ये दिया. फिर टोटल जो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट थी वो एज इट इज उतारी है. ये मेरी इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है. ठीक है, और ये मेरी पहले वाली स्टेटमेंट है. सो आई होप इट इज इजी टू कन्वर्ट फॉर लूप टू वाइल लूप. You can do the second question for me. I give you 5 minutes to do that. So are you able to do that?
क्या आप लोग कर रहे हो बेटा? खुशी, नीरज, दीपाली, मनराल? Okay, just try it and then I will discuss what exactly needs to be done. So just try it. इसी तरीके के, see this is a very simple level, इसी तरीके के questions are expected for your exams as well. ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो ना, जो क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल पेपर में आता है. ठीक है, बहुत कोई हाई फाई लेवल नहीं एक्सपेक्टेड है आपसे. आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, न्यू टू प्रोग्रामिंग है, एंड दैट टू इट इज नॉट योर एरिया ऑल्सो. तो इसलिए सिंपल कोड, सिंपल क्वेश्चंस विल बी एक्सपेक्टेड. तो ओके फाइन, लेट्स डिस्कस इट टुगेदर. वी हैव इम्पोर्ट मैथ, ये एज इट इज आ जाएगा, टोटल वाला एज इट इज आ जाएगा. द ओनली चेंज दैट आई नीड टू डू इज फॉर दिस स्टेटमेंट. इसके लिए हमें चेंज करना है, और इसके लिए सॉरी, चेंज करके हमें कितने स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे? 3. कौन कौन से 3 स्टेटमेंट बनेंगे? इनिशियलाइजेशन का, ठीक है, while लूप का, दैट इज लूपिंग, और एंड स्टेटमेंट एक साथ आएगा, और इंक्रीमेंट का. ठीक है, तो लेट्स सी. फॉर, अब वेरिएबल का नाम क्या है? काउंट. तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे काउंट इक्वल्स टू, कितना वैल्यू है स्टार्टिंग में? 1. तो काउंट इक्वल्स टू 1, सॉरी. एंड देन हमें क्या करना है? काउंट कहां तक जाना चाहिए? 11 तक. लेट मी जस्ट टेक द इरेजर. ओके, सो काउंट को कहां तक जाना है? 11 तक. तो यहाँ पे ये मेरी इनिशियलाइजेशन हो गई. अब मुझे वाइल लूप लगाना है, तो मैं बोलूंगी वाइल काउंट. काउंट को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, काउंट इज लेस देन 11. ठीक है, उसके बाद जो ये स्टेटमेंट है ये एज इट इज आ जाएगी, और यहाँ पर लगेगी मेरी इंक्रीमेंट स्टेटमेंट. और अब इंक्रीमेंट कितने से है? 3 से है. तो मुझे अब काउंट को ही इंक्रीमेंट करना है 3 से. बस ये 3 चेंजेस है. कभी भी आपको फॉर लूप से वाइल लूप बनाना है, आपको 3 चेंज करने हैं. आपको क्या क्या चेंज करने हैं? इनिशियलाइजेशन लिखना है, वाइल लूप लिखना है जिसमें एंड कंडीशन आएगी, और इंक्रीमेंट देना है. इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? शेल वी मूव? परफेक्ट. तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, समझ आ रहे हैं? डुएबल लग रहे हैं? कर लोगे, don't worry, it's just a little practice that you need, but you guys will be able to do it. Now in the next, again you have to write output. So the value is, what it is saying is, total equals to 0, so and count equals to 20. While count is greater than 5, total plus equals to count equals to -1. Let's understand this whole statement one by one. ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा क्या क्या कह रहा है. सबसे पहले इसने बोला कि टोटल को 0 असाइन कर दो, फाइन. फिर उसने बोला काउंट की वैल्यू 20 कर दो. लेट्स सी. टोटल को मैं टी से लिख रही हूँ, टोटल की वैल्यू है 0. काउंट को मैं सी से लिख रही हूँ, सॉरी, काउंट को मैं सी से लिख रही हूँ, काउंट की वैल्यू है 20. परफेक्ट. उसके बाद उसने मेरे से बोला वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 5. तो काउंट जब तक 5 से बड़ा है, तो ये लूप कहीं कुछ उल्टा चल रहा है. 20 से चलना शुरू हुआ है, कहां तक आएगा? 5 से बड़ा, यानी कि 6 तक वापस आएगा. 20 से लेकर 6 तक की रिवर्स काउंटिंग होगी. अब हमें ये देखना है कि रिवर्स काउंटिंग एक एक स्टेप से होगी, 2 स्टेप से होगी, या 3 स्टेप से होगी. दैट वी विल सी लेटर. सो वी जस्ट हैव गॉट टू नो कि ये लूप उल्टा आ रहा है. ठीक है ना, इट इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट, वी कैन टेक इट. ये बोल रहा है टोटल में क्या ऐड कर दो? काउंट ऐड कर दो. ओके फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. काउंट का वैल्यू है 20. काउंट 5 से बड़ा है? यस, बड़ा है. क्या करना है? टोटल में काउंट ऐड करना है. सो टोटल कितना है? 0. क्या ऐड करना है? अभी काउंट का करंट वैल्यू क्या है? 20. ठीक है, चलो. नेक्स्ट, काउंट को डिक्रीमेंट कर दो 1 से. तो अब काउंट कितना हो जाएगा? लेट्स डू इट फ्रॉम द वेरी लाइक अ बेटर वे. मैं यहाँ पे ढंग से लिखती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए.
this is whatever I'm writing, this writing and this all stuff is just to make you understand the program. Exam में आपको बस output लिखना है, ठीक है ना? You don't have to write any such thing. So यहाँ पर let's see, I have total जिसको मैं T से represent कर रही हूँ, जिसकी current value 0 है. काउंट जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसकी वैल्यू है 20. और हमें पता है कि हमारा जो व्हाइल लूप है वो किस कंडीशन में काम कर रहा है, डिक्रीमेंट में काउंट कर रहा है. अब हम हर आइट्रेशन के बाद अपनी टोटल और काउंट की वैल्यूज यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है? सो पहली बार काउंट की वैल्यू 20 है, टोटल की वैल्यू 0 है. अंदर आया, काउंट इज ग्रेटर देन 5, यस काउंट इज ग्रेटर देन 5. देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड काउंट टू टोटल. काउंट कितना है 20, एडेड टू टोटल, टोटल कितना है 0 है, आंसर कितना आएगा 20. परफेक्ट. अब काउंट क्या हो जाएगा, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा. सो नाउ द न्यू काउंट विल बिकम 19. अगेन क्योंकि लूप है वापस जाएगा, वापस जाके क्या चेक करेगा, क्या 19 ग्रेटर देन 5 है, यस. तो अब क्या करेगा, काउंट की पिछली वैल्यू कितनी थी 20 थी, उसमें 19 और ऐड कर देगा, कितनी बन जाएगी 39. और काउंट की वैल्यू डिक्रीमेंट होके हो जाएगी 18. फर्दर जाएगा, फिर इसमें जो भी 39 था इसमें ऐड करेगा 18, काउंट की वैल्यू 17 हो जाएगी. फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें 17 ऐड करेगा. इस तरीके से डिक्रीमेंट होती होती पहुंचेगी 6 तक. दैट विल बी द लास्ट. जब ये 5 हो जाएगा तो ये लूप बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद जो टोटल है, टोटल में जितने भी ये वैल्यूज आए होंगे इनका सम प्रिंट करेगा, विच कम्स आउट टू बी 195. यू कैन चेक इट इफ यू वांट. आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हो, दैट्स योर विश. अब नेक्स्ट है जो सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने ये 3 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, ये आपके लिए है, आपको मुझे करके दिखाना है. सो आई गिव यू 5 minutes टू सॉल्व दिस सेकंड पार्ट सो दैट आई कैन चेक योर अंडरस्टैंडिंग. हाँ जी, हुआ कुछ बच्चे? क्या मैं 5 मिनट से जल्दी पूछ रही हूँ क्या? Okay, so now Dipali, tell me what exactly is the output of the second question. Dipali, मैम ट्राई कर रही हूँ, 1 मिनट. let's try together. Dipali, you can start telling me कि हम कैसे शुरू करेंगे, what exactly is happening. So as we can see Dipali, इसमें if else if है, ठीक है ना? if else if letter है. if else if letter में क्या होता है, if कंडीशन इवेल्युएट होगी, अगर वो फॉल्स होगी तो आगे जाएगा, ट्रू होगी तो वहां से इवेल्युएट होके बाहर आ जाएगा. जहां कंडीशन ट्रू मिलेगी वहीं से हम आउटपुट लिखेंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है दीपाली? सो लेट्स स्टार्ट. यस मैम. आई का वैल्यू है 20, राइट? अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली इफ कंडीशन कह रही है कि क्या आई 10 के बराबर है. इस कंडीशन का क्या आंसर है, ट्रू है या फॉल्स है दीपाली? आई का वैल्यू है 20, क्या 20 इज इक्वल्स टू 10, ट्रू है या फॉल्स है? 20 10 के बराबर होता है, फॉल्स है. फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा. फिर नेक्स्ट में क्या चेक कर रहा है, 20 इज इक्वल्स टू 15, ये फॉल्स है ना? तो ये भी नहीं चलेगा. नेक्स्ट में चेक कर रहा है 20 इक्वल्स टू 20, तो ये क्या हो गया, ट्रू. ये क्या हो गया, ट्रू. ट्रू हो गया. परफेक्ट. तो ये क्या करेगा, ये मेरे को आउटपुट दे देगा. द आउटपुट विल बी प्रिंट वैल्यू ऑफ आई इज 20. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर दीपाली? परफेक्ट. नीरज, नाउ यू टेल मी, अगर यहाँ पे 50 होता तो आउटपुट क्या आता? अगर आई का वैल्यू 20 की जगह 50 होता तो आउटपुट क्या आता नीरज? नीरज इज देयर राइट? बताओ नीरज.
Oh, false. Sorry, I can't hear you, Neeraj. No, 50 is not equal to 10. बट अगर आई का वैल्यू 50 होता, आई एम आस्किंग अगर 50 होता तो आंसर आता आई इज नॉट प्रेजेंट, राइट? क्योंकि पहला लूप भी फॉल्स होता, दूसरा भी फॉल्स हो जाता, तीसरा कंडीशन भी फॉल्स हो जाता. सो हम कौन सी कंडीशन पे पहुंचते? एल्स. एल्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो प्रिंट होता ही होता. सो इफ इट वुड हैव बीन गिवन कि आई इक्वल्स टू 50, सो एल्स का कंडीशन एग्जीक्यूट होता और यहाँ पे हमारे पास आंसर आता आई इज नॉट प्रेजेंट. No issues. Next, we have sum equals to 0. Now this, if you can see, this code is a repetition of a question before. पहले भी वो question आ चुका था, उसी का repetition आ गया है by chance. So we have already done this code. We can skip it. The answer is 3. Let's move to the next slide. Now this is a very good question. The B1. इसमें क्या दिया हुआ है? आपको एक डिक्शनरी दी है. You have been given a dictionary whose name is grades. So the name of this dictionary is grades. इसके अंदर क्या वैल्यू है? डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक की वैल्यू पेयर होता है. एक डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर की एंड वैल्यूज आर पेयर टुगेदर इज कॉल्ड डिक्शनरी. So in dictionary, if you can see, we have grades and we have the key and value pairs. So these are my pairs that I have. Now further, we have certain statements to execute. Now let's find out. As you can see, सबसे पहले I had asked the system to print the keys of the grades. What are the various keys present in the grade? So the very first value that you give is called key, and the second value is called value. So this is key and this is the value of the key. So key is Sahil. So we have 3 keys in the dictionary: Sahil, Abhijit, and Garima. So these keys have been printed by the system: Sahil, Abhijit, and Garima. You were required to write the output. You could have easily written the output here. In this case, you don't have to write all this statement. That is very okay. If you just write in the square bracket, you just write Sahil. Sahil. यहाँ लिख देते हैं Sahil, and the other name is Abhijit, and the third is Garima. So इतना fancy अगर नहीं भी आता है output, that's not the issue. We are testing your understanding of the subject and not your command over the syntax of the, output. So this is a compiler generated output, इसीलिए इतना elaborated है. You could have easily written here the 3 names: Sahil and your Abhijit and Garima. So let's just do that. इसको मिटा देते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं. Perfect. So next, we have print grades dot values. So what I'm expecting, I'm trying to print the values. So what are the values? 90, 65, and 38. So you can see the values are 90, 65, and 38. Perfect. In third, you are trying to print the length of the grades. Length क्या है dictionary की? The length of this dictionary is 3. So I'll get 3. Further, I'll get grades. What I'm doing is I'm trying to add a new index. I am trying to add a new key value pair, that is cruise to value 99. So you have just added a new. Since dictionary is not a dictionary कैसी है? Dictionary एक mutable data structure है. So you can easily add values to it. So this statement will execute if it is a dictionary, but it would have not executed if it had been a string. Last me, you're trying to print the items of the dictionary. Items means you're trying to print both the keys and values. ये सिर्फ keys दे रहा था, ये सिर्फ values दे रहा था. Items will give you both keys and values. So you can see the key value pairs here. Sahil with 90, Abhijit with 65, Garima with 38, and Kurus with 99. Here this spelling mistake avoid ये मैंने लिखते में कर दिया था. So that is it. Okay. So I hope this is clear. The dictionary is clear to you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. So next we have differentiate between continue, pass, and break statements in Python with suitable example.
So I have a question which says I have to differentiate between these three statements. This has already been provided in my PPT. What do you mean by these statements? Along with the example of each. So if you have gone through the PPT, you must know that this is already covered very well in my PPT. Now let's move to the next question. So this is a question of 3 marks which has two parts. So this is for 3 marks and this is again for 3 marks. You have to write output. You are running a for loop on a string. This statement is a string. हम एक for loop चला रहे हैं एक string के ऊपर. So fine. Perfect. So here, what you are doing is letter. Letter is the variable, the iteration variable. Okay, and the word is statement. In this, you have to loop through each statement. And what you are doing exactly is कि अगर letter M है, if letter is M, you don't have to do anything. You just continue the loop. Otherwise, you will print that current letter is whatever letter you have. So what will happen? It will iterate to all the letters. It will print S, T, A, T, E, but it will not print M because I said जब M आए तो continue कर जाओ. Fine. So let's see the output of this. See, it has printed S, T, A, T, E, E, and T. It has missed an M. Is that clear? Yes, ma'am. Perfect. Let's move to the next slide. So here the first is write a function print a dictionary that prints a dictionary where keys are numbered between 1 and 5 and the values are the cubes of the key. So you have to print basically a dictionary where the keys are numbered and the values are from this to this. Okay, I give you I give you 5 minutes to do this so that we can again discuss what exactly is the code for this function. Okay, so start writing. You just have to write a very small code.
So are we done? किसी ने करा? Did anyone of you was able to write it? Am I audible? But हुआ नहीं मैम पसंद। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. So, fine. So let's just write it here. So basically you need to define a dictionary, and each number should be the number whatever you want. The value of the number should be the cube of that number, right? We can have a shorter code as well, but since it is for 5 marks, I'll give you a code that is a little detailed one. हम इसको lambda function से भी कर सकते हैं, but let's say, so हम define करते हैं एक function जो कि print cube function है, ठीक है? उस function के अंदर हम क्या define कर रहे हैं? Basically, हम एक blank dictionary define कर रहे हैं. Further, हम क्या कर रहे हैं? Further, in that function only, we are trying to write a for loop. For I in range, तो हमें कहाँ तक चाहिए? हमें 5 तक चाहिए, तो हम लिख रहे हैं 1 to 6, क्योंकि हमें 1 से 5 तक चाहिए. So 6 minus 1, that is 5. So what exactly I want? I want to add cubes dictionary, जो मेरी खाली डिक्शनरी है उसके अंदर, cubes dictionary के अंदर I want to add I, जो भी I का वैल्यू आए, और ith इंडेक्स पर आए क्या, जो भी सॉरी नम नहीं, I into raised to the power 3. ठीक है? Once this whole is done, once this whole is done, just give me a minute, right? Just give me 1 minute. I have a very important thing to attend. Yeah, I'm so sorry. So first, so we have allocated the values, or the values key, whatever is the key, whatever is the value of the key, I'm just doing the power of that. So let me write it more clearly for you guys. Let me just erase it a little and then write it more clearly. तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं. So we are defining a function which says print cube dictionary, whatever you want to give the name to the function. Further in the function we define a dictionary with the name that says cd equals to a blank dictionary.
after that, you are giving a for loop for I in range. Range is 1 to 5. So I'll write a 1, comma 6. Further in the for loop, what exactly we are doing? We are saying कि क्यूब जो हमारी डिक्शनरी है CD, उसके ith इंडेक्स पर वैल्यू क्या आ जाए? I का रेज टू द पावर. दिस इज रेज टू द पावर ऑपरेटर. ठीक है, otherwise you will have to use math class. So either way you can do it. Again, further we write a for loop for key value in C. ठीक है, sorry CD. This is your dictionary. इसके लिए क्या करना है? Just a mistake. It has to be CD dot items. So for key value in CD dot items, CD के items में key value pair के लिए आपको क्या करवाना है? हमें print कराना है. So this loop is basically for printing your dictionary. So print of F for the value can give key, and this is key dot, this is value. So you can print the key value pairs. Fine, I'll write a more clear code when I'll provide you the PPT. I'll write it a more clear code. I just forgot to add this code to your PPT. So for now, the thing is that we need to define a dictionary. We need to run a for loop so that each item of the dictionary gets the value of I raised to the power 3. And then we just need a loop to print the dictionary. Is that okay? Is it tough? Did you find the program tough? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, fine. So don't worry. Majorly, see, I told you this is a paper of a different course. So majorly from string tuple dictionary, as I told you earlier, also expect theoretical questions from them or output based questions from them. Programming questions are majorly expected from the looping constructs, your conditional statements, majorly from that. Okay, and a few from list or string that we have already covered a lot. Fine, in the next question, we have to show the output of the following code. We have an S1 and an S2. These are two list with the name S1 and S2. We have ABC, we have CDE. In first, I am asking S1 union S2. So we all know union operation, it will do the union. Means two list will be added. Union difference, ये सब हमने पढ़ रखा है ना in 6th 7th class. So this is the same operation. So it will add the two list. Okay, it is A, E, C, B, D. So this is the union. Next is you have to print the intersection of the list. So for intersection, we just have to find the common element from the list. So only C is the one which is common element. So we can only have C here. So this is intersection. Then you have to print the difference. Difference is those which are present. You have to print S1 difference S2. So those elements which are there in S1 but not in S2. So those elements are A and B. So the difference is A and B. This is the ordering is because I have given the statement like that. Next is print S1. I mean, you can write A and B. Here you can write the output as A comma B in a square bracket. That will also do, or in a cursive angular bracket. Sorry, cursive bracket. Further, you have to print S1 dot symmetric difference of these two. So symmetric difference is not in our syllabus, so we will skip this. Okay. Next is write a Python function smaller xy that accepts two integer x and y and returns the smaller of the two. So this is a very simple if loop. If condition ka hai, you just need two numbers. You have to check if x is less than y, then print something. If y is less than x, then print something. So this is a simple if else. Okay, this is a simple if else. And the other one, write another function with smaller, जिसमें तीन number को compare करना है. It is a three ladder of if else. Okay, so this code I leave you as a homework. You have to complete it. In case you find a problem, so you come to me in the next class on 9th and you can ask me. Okay.
But this you have to do. Question number 5 you have to do. This is a very easy question. Such questions are expected. Oh, sorry, I had written the dictionary smaller function. So, okay, fine. This is the lambda function that I was talking about. You can write this also. So you can define print dictionary, and dictionary equals to key raised to the power 3 for key. This is a lambda function, but this is a little complicated one. So I didn't give you this code. I will prefer that if it comes, so you can write this code. The next question is, what do you mean by, oh, okay, fine. So we have half an hour left for today's class. So what I'll do is, I will now, since we have discussed most of the output based question very detailed, हमने काफी question बहुत detail में discuss करे हैं. So I will move you through the questions a little faster. ठीक है? What I'll do is, when I'll share this PPT, I'll share the answers with you. Is that okay? Okay, ma'am. Yeah. So what exactly I will now discuss a few theoretical questions. की theory आती है तो आपको क्या expected है, कितना लिखना है, कैसा लिखना है और किस type के theory questions आएंगे, because I think output वाले मैंने more or less काफी cover कर दिए हैं. So this question number, the first question, what do you mean by scope of a variable? Differentiate between local and global scope. So we all know what is the scope of the variable, and this I have added this into my PPT as well and in your book as well. So you just have to give the example of local and the global scope, which is already provided in my PPT. So this is a 5 marks question which you can easily find from my PPT. This evaluate arithmetic operator, this is very simple. ये आपका जो BODMAS rule होते हैं उस तरीके से evaluate होंगे. ये the ruling structure is provided into my supplementary material. You can refer that for these kind of output. These kind of output are also expected in exam. So you can work on it. In case you find any problem, you are open to write on the group and I will provide you with the explained solution. Otherwise, with this PPT, I'm going to provide you the solution, the output of all the codes, so that you run it at your end and you can match the answer with mine. Okay. Only theoretical answers I will not provide because that require your own input as well. But for everything else, that is the output based question and the practical program, I'll give you an answer. Further in next, this is a very easy program and very important one as well. This kind of question do also come. It is an if then else ladder in which you have to just take the score of the user. आपको score लेना है. We have already covered this in the class. You have to take the score and then you have to print out the grade. So this is the program that I have already added. When I'll be sharing the PPT, I'll try to do one thing. I'll modify the PPT so that in one particular slide you will see one question and its corresponding answer. Okay. So now again, write the output of the following function. So we have given a string and we have the following things to produce output. I hope these are all clear from their name, like lower, count, find, write, find, split, swap case, capitalize. So you guys can do it with the help of my PPT and the content. You can read the function, find out what will happen. For example, let's say what will happen s dot count I. So you have to count the occurrence of I in the given string s. So it has occurred 1, 2, 3 and 4 times. So the answer is 4. इस तरीके से you can do these questions. Okay, I am rushing a little faster. Further, write the program to calculate the area of circle. This is same as calculating the area of a rectangle. You have to write a function, you have to take an input, and then you, if your input is less than 0, then you can raise a value error, otherwise you can return the area. So raising this error, do you want to raise it or not? It is totally your choice. Exam में अगर ये question आता है, क्योंकि इसने नहीं बोला है, कहीं भी in the question it has not asked you to validate the input. It has not asked you to validate the input. So this statement can be skipped and rest of the program should be written. Okay. Now these are again a few questions of output based, for which I'll be providing you the solutions. Okay. This is a question that you may write a function to count the number of vowels in a string. So this is again, it's a combination of for and if loop. I'll provide one standard solution, but for programming there are many solutions. So अगर आपके पास कोई easier solution है, that is also fine. Till the answer is correct, we don't have any problem what solution you are producing. Next,
write a function that accept two number and return the average. इस तरीके के छोटे छोटे programs आ सकते हैं. Also this kind of question I forgot to discuss. This is very important. I had discussed that during my classes a lot कि आपको valid और invalid identifiers पता होने चाहिए. You can see there are 6 identifiers of marks 3. So you have to find out which of them are valid and which of them are not. For example, this is not a valid identifier. Also, this is not a valid identifier. Okay. So you can find this out using the identifier rules that I have shared in my PPT and discussed a lot of time. What is the type of arguments used in the definition of a function add, write the output that will be produced on the execution of the following code segment. So this in such question you have been provided a function और ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से type of argument हमने use किए हैं. So when I talk about type of argument, you have to up here what you will do if you have not studied तो आप यहाँ लिख दोगे integer type के argument है because the values are integers 3 5 7. No, the argument type is these are default arguments. Okay, these are default arguments. That is, if the user provides a value, well and good. If it does not provide the value, we will have the value from the default. Similarly, you have to write the output. So this is the expected answer, that these are default arguments, not integer. We are not asking you data type of the argument. We are asking you type of the argument. So is that clear, the difference between type of the argument and data type of the argument? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Fine. So these kind of questions are also expected and they are quite easy to solve. आपसे simple पूछा है क्या है, देखो direct value दी हुई है तो ये default है. So here what will happen in all the cases where the value is there, it will provide you the answer from the this value which is given during the call. If no value is given during the call, you can directly write. So let's discuss the output of this particular question because इस तरीके का हमने पहले discuss नहीं किया है. So let me just erase all this. So and okay. So इस तरीके का since we have not discussed, so the type of argument that we are having is default. And here the output will be this is default function add and we have not given any parameter. So it will take value 3, 5 and so what is the sum of 3, 5 and 7? 15. So it will give me 15. Maths तुम check कर लेना, output मैं बता रही हूँ. Is that okay? So further it has you have to add the next is add 7. So it has we have just given one argument. So what will happen? It will get mapped to the very first parameter. पहला parameter क्या है? A. So this 7 will get mapped to A. So this will be something like this. This call is something like this. I'm calling add with the value 7 5 7. So the answer will be 7 7 14 14 plus 5 19, right? Yes or no? Yes, ma'am. Further, we have to add again. Now I have given two parameters, so this will be 6, 8, and 7. So you can write out the sum. 21. This is 14 plus 7, 21, right? Further, here you have specifically mentioned that you are giving the parameter C. So the call becomes whenever you give name of the parameter, then the value will get assigned to that parameter only. So यहाँ पे name नहीं दिया था तो 1 2 3 4 ऐसे value assign होगी first parameter को second parameter को. यहाँ पे name दे दिया है, so the value will get assigned to that parameter. So it will be 3 5 and 9 and the output becomes 20. Sorry, sorry 7. 17. Yeah, I'm so sorry. I was just ठीक है यहाँ लिख देते हैं, काट देते हैं. So this becomes 17. Okay. So is that clear? Yes, ma'am. So let's move to the next Yes, slide. Again, you have a function. You have to write a function which takes 3 parameter n1, n2, n3 and returns the minimum and maximum of these arguments. So again, this can be done using क्या use कर सकते हैं? If then else ladder है ना? If else if ladder जो थी हम इसमें use कर सकते हैं. एक मिनट थोड़ा सा साफ कर लेते हैं so that
So yeah. So here we can use if, else if letter to solve. Okay, if, else if, else. So this can be solved. What will be the output? Also, one more thing. So that you should work, I'll be providing this solution after 2 days. That is on 9th, I'll provide you this PPT. And जो हम 9th को discuss करेंगे, that I'll give you a day after, so that you also brainstorm your things. What will be the output of the following code? So this is the code. You have to find out the output. This you can do. We have already discussed it. It's a list question. Write a function named function series sum, which will accept n integers to calculate sum of first n terms. So this is a question of for loop. सीरीज है एन तक चलानी है एंड सम करना है. इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने सम टोटल करा है ना. this is the same question, only the writing, it is asking you to write the code. So you have to write a for loop that will run till the n, and then you will just have to do the sum inside the loop and print the sum outside the loop. So we have done this question already. Again, you have a list, you have different list operations to do. List operations, string operation, tuple operations, all the list has been provided in PPT as well as into your book. You can go through them and then you can actually work on it. Write a function fn common to find the common elements of a given of two list. Okay, you can write them using the common elements निकालने. You can write using union, difference, ये set operations के through you can do it, or if we do not want to do it, that's okay. What we can do it, we can write a small function for it, right? I'll provide you a solution for this. Now what I'll do is, since we just have 15 minutes left, let's move to the theoretical questions. Okay, these kind of questions I have already discussed a lot in the class, how to print pattern, how to print this, right? So you can do it. There are a lot of questions for practice, and this is an exhaustive set. So if you practice these questions only, that will be also fine. Ye error, try, error, except we have also done this in the last class, so I'm not touching it due to the constraint of the time. These are a few sample theory questions that we can have. Okay. Explain the basic structural component of Python program. So you can here, you can, sorry. आपकी ना आवाज बहुत गूंज रही है बच्चा. So if it is like, can you write in the chat box what is your query? Since your, I mean, the voice is very echoed in from your background. Chat box में लिख दो if you have anything, or you can write me a WhatsApp message for that. Till then, I'm discussing the question. Explain the basic structure of component of the Python program. So they are your starting from your comments. So you have comments, you have functions, you have various things. This question is clearly explained in the book as well as in my PPT. I have given every content regarding this. What is the difference between compiled and interpreted language? All such question can come between anything from 5 to 7 marks. So why is documentation required in code? Why do you require? Oh, okay. So, Neeraj, I guess. नीरज, these questions were जो अभी तक डिस्कस हुए हैं वो प्रैक्टिकल नहीं थे. They were basically practical based question. वो थियोरी में भी आ सकते हैं, राइट? आउटपुट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो थियरी में आएंगे. आउटपुट बेस्ड जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, जैसे कि ये वाला कि इसका आउटपुट बताओ, ये थियरी में आएगा. लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन कि राइट अ फंक्शन जो ये करे, इसमें ये हो, सो इस तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ सकता है और थियरी पेपर में भी आ सकता है. सो यू कैन बी आस्क्ड टू राइट अ फंक्शन in theory as well as in practical में तो आएगा ही आएगा ना. practical में तो what you will get, practical में you will get a few questions, 4 or 5 questions in which you will have to write codes, and then there will be a viva that will be taken for each question, for each code, whatever you are doing. So external will take a viva about your understanding of the subject. But for theory, you have to prepare everything. Theory में you will get some theory questions like these, some output based questions that we have discussed so far, and some practical based question, coding questions. Is that clear, Neeraj?
If it is clear, you can write yes to me in my WhatsApp chat. Okay, the next question is why documentation required in the code? Why exactly we require documentation? What are the different types of errors and exceptions that can occur in Python program? How to handle them? We have already done that. What is exception chaining? We have done how when we have different exceptions popping up in the same. How can you determine the order and number of arguments required for a function call? This is basically from the default argument section, the parameter type section that we have discussed, default argument, exam, what are default argument, how do they allow to be called with the fewer arguments? All these details have been discussed. So this is a basic bank of sample questions for you to practice. Now I'll stop sharing my screen and we can have your doubts, if any.